Hi guys, welcome back to the channel. So last class we have started with Ehlers-Danlos syndrome. We have started with the histopath part of Ehlers-Danlos syndrome. We'll be continuing that. Okay. Histopathology, the raising like lesions that occur at the site of hematomas are fibrous masses with numerous capillaries and sometimes foreign body giant cell. Subcutaneous nodules show partially necrotic fat tissue with dystrophic calcification surrounded by dense collagen. Okay, इतना हम लोग last class में देख चुके थे. Now, coming to generalized collagen defect, dentinal abnormalities occur. Vascular inclusions, denticles, and irregular tubules are found predominantly in the root section. Okay. Now, in addition, irregularities of DJ and CJ as well as hypoplastic enamel have been described. Treatment: as patients have bleeding tendency, secondary infections, delayed wound healing, and dehiscence secondary to poor collagen formation and therefore minimal tensile strength. क्योंकि पेशेंट में ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, डिलेड वुंड हीलिंग होती है, डायसेंस होता है, तो इसकी वजह से सर्जरी इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर द ट्रीटमेंट प्लान इन दिस सिचुएशन. ओके, नाउ those with ecchymotic form and severe form are considered to be at risk for large vessel rupture and subcutaneous or GIT hemorrhage. तो ecchymotic form or severe form are mainly at the risk of bleeding tendency in form of hemorrhages. Elective surgeries are avoided and required interventions are limited in extent. They are also approached with preparations to support hemostasis and transfusion. तो हमारा मेन फोकस hemostasis पे होता है. Wounds are closed with long-term resorbable or non-resorbable sutures. Now coming to the prognosis, patients with mild forms of the syndrome live full lifespan. The ecchymotic form and the severe form has variable life expectancies related to severity of the disease expression. Now, cardiovascular and GIT bleeding is the most significant complication and tends to occur in late teens and early adult years. तो मेनली ब्लीडिंग रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं. प्रोग्नोसिस जो माइल्ड फॉर्म में है उनका ठीक है, लेकिन जो इक्यामोटिक या सीवियर फॉर्म में उनका प्रोग्नोसिस थोड़ा पुअर है. ओके, that's all about Ehlers-Danlos syndrome. Now we'll be starting the new syndrome, that is Marfan syndrome. Okay, let's start. Marfan syndrome. Clinical presentation and pathogenesis. It is an autosomal dominant trait. 85% of cases result from transferred inheritance and 15% from new mutation. एक तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, दूसरी चीज़ है कि 85% ट्रांसफ़र इनहेरिटेंस होता है और 15% ही न्यू म्यूटेशन के कारण होता है. The clinical features result from a basic defect in chromosome 15 that codes for a protein responsible for collagen strength. तो क्रोमोसोम 15 में बेसिक डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से हमको इसके सारे फीचर्स दिखते हैं. बिकॉज दिस क्रोमोसोम 15 कोड्स फॉर द प्रोटीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलाजन स्ट्रेंथ. Therefore, defective collagen that is more soluble and more elastic is formed. White तो सारे जितने भी ऑर्गन हैं उसमें जो डिफेक्टिव कोलेजन होगा, इसलिए दिस सिंड्रोम मैनिफेस्ट वाइड स्प्रेड मल्टी ऑर्गन्स मैनिफेस्टेशन. ओके, तो this was about Marfan syndrome. थोड़ा इंट्रोडक्शन आई हैव गिवन. आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास. तो कल क्रिसमस है, सबको हैप्पी क्रिसमस. विंटर्स आ गए हैं, होप आपके यहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही है. एंजॉय विंटर्स. अब तो हॉलीडेज़ भी स्टार्ट हो जाएंगे सबके, क्योंकि एक बार 25 से स्टार्ट होते हैं, फिर जनवरी संक्रांत तक हॉलीडेज़ रहते हैं. तो मोस्टली मेरे वीडियोस भी तभी तक आएंगे. उसके बाद आई be taking break of 2 or 3 months, then I'll be coming back to the channel. Okay,
Okay, we'll be continuing this in the next class. Till then, like, share, subscribe, and comment. Bye.